Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the very important SUTRA model. Now, because coronavirus, this pandemic is going on right now globally, so you can expect 2 to 3 questions, and even more than 2 to 3 questions, both in prelims, mains, and also in interview regarding the different technological advancements and different you can say statistical computations regarding coronavirus, the waves, different waves, the first wave, second and the third wave that is being predicted in the month of October to November, and the Sutra model. Now, Sutra model was really helpful initially, but later on it was questioned because of its prediction about the second COVID wave, right? So the Sutra model it was designed by the scientists from IITs of Kanpur and Hyderabad. They have applied the Sutra model to protect the COVID graph in India. And it first came into the public attention when few of the scientists or the expert members announced that in October 2020 the India was past its peak, but then we saw the second wave also. That is why it was questioned, and that is why some people say that it is flawed. Okay, so questions are being raised by many scientists on whether government-supported model called Sutra to forecast the rise and ebb of the COVID-19 pandemic may have had an outsized role in creating the perception that catastrophic second wave was unlikely in India. But it came. We all, went through the second wave that came into India. So now let us understand all about the Sutra model and also its effectiveness. So you have to remember what is the full form of Sutra model. सबसे पहले आपको समझना है कि Sutra model का ना full form क्या है. This is very important. So here the Sutra model S stands for, S का मतलब यहाँ पर क्या है लिख लीजिए. इसका मतलब है susceptible. S means susceptible. Then U means, U का मतलब यहाँ पर हो जाएगा undetected. Okay. Then we have T. T over here means tested. Okay. या आप बोल सकते हो positive. And RA का मतलब क्या होता है? RA means removed approach. Write it down. It means the removed approach. So S means susceptible, undetected, tested and removed approach. It first came into the public attention when one of its expert members announced in October 2020 that India was past its peak. यानी कि जो peak है कोरोना वायरस का उसको हमने पीछे छोड़ दिया है. बट फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल 2021 में फिर से सेकेंड वेव आया था. नाउ दिस मॉडल इट इज बेसिकली the work of a committee comprising scientists from IIT Kanpur and Hyderabad. Now you have to remember that we have, write it down, a national COVID-19 super model, national COVID-19 super model committee. Please write it down. This is important both for prelims and as well as for mains. So we have a national COVID-19 super model committee which was formed by the government of India to make projections about the spread of COVID-19 in India. And this committee has IIT Kanpur scientists and IIT Hyderabad scientists which have used the Sutra model, this model to predict the waves. Okay. Now you have to understand that this model uses 3 main parameters to predict the course of the pandemic. तो ये जो आपका सूत्रा मॉडल है ना, ये 3 पैरामीटर्स यूज करता है ताकि कोविड के पैंडेमिक के वेव्स को किस चरण में किस तरीके से ये कोविड इवॉल्व करेगा, म्यूटेट करेगा, उस वेव को पीक पॉइंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे. फर्स्ट पैरामीटर वी हैव एज द बीटा पैरामीटर ऑल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट रेट. प्लीज अंडरलाइन, इसको कॉन्टैक्ट रेट भी बोलते हैं. सो इट मेजर्स हाउ मेनी पीपल एन इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स पर डे. हर दिन एक इन्फेक्टेड इंसान कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है. So it is related to the R0 value, which is the number of people an infected person spreads the virus to over the course of their infection. एक इन्फेक्टेड इंसान है, वो इन्फेक्टेड इंसान पर डे कितने लोगों को इन्फेक्शन देता है वो मेजर किया जाता है बेटा वेरिएंस या बेटा पैरामीटर के बेसिस पे. इसको हम R0 वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड पैरामीटर इज रीच पैरामीटर. इट इज अ मेजर ऑफ द एक्सपोजर लेवल ऑफ पॉपुलेशन टू द पैंडेमिक. नाउ इट इज नॉट एन इंडिविजुअल पैरामीटर. पूरा जो पॉपुलेशन है वो कितना एक्सपोज्ड है इस पैंडेमिक में, उस लेवल को मेजर किया जाता है रीच पैरामीटर से. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को. अब थर्ड होता है एप्सिलॉन. सो इट इज अ रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केसेस. कितने डिटेक्टेड है वर्सेस कितने अनडिटेक्टेड केसेस है, इसका रेशियो है आपका एप्सिलॉन.
ये तीनों पैरामीटर्स को यूज करके हम किसी भी पैंडेमिक के वेव को प्रोडिक्ट कर सकते हैं सूत्रा मॉडल का यूज करके. ओके. Before we move forward with this lecture, here's a small announcement for all of you. Unacademy is presenting Unacademy Promise. What is an Unacademy Promise? Unacademy promises to give 1-year extension if you do not clear UPSC exam with a 2-year subscription on Unacademy Plus. If you're a college student, if you're a working professional, you have taken a 2-year plus subscription on Unacademy Plus. And by any chance, with few marks here and there, if you miss out in the final list, then don't worry. Unacademy promises you that we will give you free of cost 1-year extension if you do not clear the UPSC exam with your 2-year subscription. This offer is valid till 14th of July. So before that, if you take a 2-year plus subscription on Unacademy Plus, we are going to give you a promise from our side to be with you in this journey to crack your UPSC CSE examination and also fulfill your ambition of becoming an IAS officer. New batches are starting from 14th of July for 2021, 22 and 23 aspirants. So we have a Phoenix revision batch for 2021 aspirant. We have a 1-year batch for 2022 aspirants, and those of you who are wishing to give your exam in 2023 or 24, then we have a separate 2-year batch for all of you. So in case you want to take your subscription, in case you want correct guidance in your journey of UPSC CSE, you can take your subscription today. The links are given below in the description box, and you can use this code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो ARPITA10. Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलते हैं Unacademy की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू ऑल्सो गेट गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस. मतलब अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो प्रीलिम्स तक नहीं बल्कि आपके मेंस तक एक्सटेंडेड रहेगा. प्लस अगर आप कॉम्बो पैकेज ले रहे हो यानी कि जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो ले रहे हो तो आपको मिलेगा टोटल 45% डिस्काउंट. ये ऑफर भी आपका 14 जुलाई तक है. 25% डिस्काउंट ऑप्शनल के साथ, 10% आप रेफरल कोड यूज करेंगे ARPITA10 उसके साथ मिलेगा आपको, एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दे रहा है Unacademy 14 जुलाई तक. तो ये कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट लीजिए, 25% ऑप्शनल के साथ 10% Unacademy दे रहा है, टोटल 45% डिस्काउंट, और आपका पूरा सब्सक्रिप्शन पैकेज आपको यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की जर्नी में हेल्प करेगा. Now let us understand the problems with this सूत्रा मॉडल. इस सूत्रा मॉडल के साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है ये समझते हैं. पहली प्रॉब्लम है वेरिएबिलिटी की. बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हुए हैं कि जो अभी तक प्रोजेक्शंस हुए हैं ना, प्रपोजल्स रखे गए हैं, वो काफी इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है उससे भी इनकंसिस्टेंट है. कोरोना वायरस कैसे बिहेव कर रहा है ये वायरस, उससे भी इनकंसिस्टेंट रहे हैं. बहुत वेरिएबिलिटी है, चेंजेस हैं. Too many parameters. Model was complicated because it was sure of too many parameters. When there are too many parameters, the projections tend to break down. Then we ignore behavior of the virus. इस सूत्र मॉडल में ना वायरस का म्यूटेशन, evolution, behavior को इग्नोर किया गया है. So this also, you can say shows that this model is not 100% effective when it comes to projecting the waves of coronavirus. Okay, so this was all about the सूत्र मॉडल. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो सूत्र मॉडल के बारे में. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो do not forget to like, share and subscribe this video and share this video to spread awareness.